we had, when we were doing the registrations, we got to know a lot of concerns that people had shared with us. A lot of questions had come to us, and they were of a wide variety. And in this session that we are having today, I will try to answer. We had. Hello? Go ahead, Meenakshi. Yeah, so I'll try to answer as many of them as possible. I would like everyone to be as participative as possible, and let's have some fun today. Okay. So today we are going to talk about emotional pain, emotional wellness, and general well-being, in particular. So, am I audible? Yes. Mrs. Raheshwari, can you hear us? Can everyone let me know if, okay, great, Yes. I'm audible. All right. So before we start, I would like all of you to just do a little bit of a self-analysis and tell me what kind of emotion you are experiencing right now. Now, when we talk about emotions, they could either be happiness, sadness, anger, frustration, irritation, you name it, and there's a name for it. So let's put that in the chat box. What kind of emotion you're feeling right now? So Meenakshi, I would like to ask you, how are you feeling right now? I am feeling excited and also a little bit nervous to speak to people today. Yeah, those are the two emotions that are going on in my mind. What about you? Oh, I'm feeling really good. Happy to be here as a moderator, having an interaction with you and our audience. So yes, feeling good. Great, great. Guys, we are waiting for your responses. Please type in the chat box. Oh, happy. Yes. Okay. What else? What all emotions? Curious. Okay, Yeah, that's interesting. That's interesting one. What else? So Meenakshi, meanwhile, as people are responding, I just want to know, understand what is emotion pain and what causes it. Meanwhile, people are responding. So, as I just gave you a lot of examples of what are emotions, emotion is a state of mind, how you're feeling, आपको कैसा लग रहा है उस time पे. And pain is a state of distress. So, इसके बहुत सारे नाम हो सकते हैं. It could be psychological distress, it could be mental pain, it could be mental agony. There are various names for this concept, and how we can describe it is by calling it a diffuse feeling of discomfort, which affects the whole outlook towards life. आप दुनिया को कैसे देख रहे हैं, आप कैसे चीजों को परसीव कर रहे हैं, आप अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, whether you feel good about yourself, whether you feel bad about yourself. तो जो ये emotional pain होता है, in this people feel bad about themselves, they feel bad about the world, they are generally in a state of discomfort, जिसकी वजह से वो perpetually परेशान रहते हैं. A lot of studies also say that this is very similar to physical pain. Physical pain में हमें cause पता होता है कि क्या कहाँ दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है. But in emotional pain we don't even know where it's happening. बस वो दर्द होता है. So, पुरानी गजलें भी बहुत बनी है इसके ऊपर, ये दर्द के ऊपर. It's very hard to define, but it exists, and it's a very, very hurtful situation. It's a very painful situation. तो जिन जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया है वही जान सकते हैं कि वो क्या फील करते हैं. There are a lot of different causes for that. For example, if a person has lost somebody,
lost somebody close to them, उनको pain feel होगा. If they have lost a relationship, there's a breakup, उनको pain feel होगा. There would be an emotional loss, emotional pain. If there is a mental illness going on, then that person might also feel emotional pain. अगर आपको कोई physical illness है, a chronic illness is there, or even a problem like a fracture. So these situations are going to cause you mental pain, emotional pain. There are certain personality types who feel emotions more intensely. वहां पे आप emotional pain ज्यादा feel करते हैं. So there are different causes which create pain in a person. So किस इंसान को किस कारण से पेन होगा वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल है, but we can help if we can identify the cause, and a person can live a mentally healthy and happier life. Right. Thank you. So, meanwhile you were answering to me, we have got different responses, like, an individual experienced different kind of emotions depending on the context. Someone experienced calmness. So each individual experiences emotional pains in different manners. So it gets manifested in different ways. So we need to see how it gets manifested in each individual's. So as you said, a physical pain हमें पता है कि कहाँ experience हो रहा है, but emotional pain को express करना in a single word is difficult. That's perfectly right. Yeah. Yes. So हम बस उसे identify कर सकते हैं कि हाँ ये symptoms है और हम ऐसा feel कर रहे हैं. That's how we can approach the therapist also. So Right. I would like to share one of my experience, as a clinical psychologist, where I could see one of my client, manifesting emotional pain in terms of anxiety. So that is how. Would you like to share your experience in that context? Yeah. So pain. So I'll give you a couple of examples. We have received a lot of questions related to loss of a loved one. And it's not just now, but we have been receiving these questions since the beginning of the pandemic. So लोगों ने हमसे पूछा कि how to be able to come back to life after the death of a loved one. How we can deal with the death of a spouse, particularly at an advanced age. How to stop feeling sad remembering memories of my dead mother. तो ये सारी चीजें जो हैं ये इमोशनल पेन कॉज करती हैं. एंड what we can do about this is identifying it first, right? And Correct. then we also need to understand that there is a cycle. Emotional pain specifically, which comes with loss and grief, there is a cycle of that. हम एक एक्रोनिम यूज करते हैं डाबरा करके, DABRA. So whenever there's a loss, a person might face denial. सबसे पहले हमें denial होता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, this thing is not right. Then we get angry कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. Then we would do bargaining कि भगवान बचा लो, भगवान ऐसा ना हो, मैं ये कर दूंगा, मैं व्रत रखूंगा, मैं पूजा पाठ करूंगा. Then comes a phase of depression. There is a sadness, a profound sadness, which again further leads to acceptance. कि हाँ, now we are going through this phase and we have to accept what is going on. So these are different stages of grief when a person feels emotional pain. जब लॉस होता है किसी इंसान का, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं इमोशनल पेन की, लिटरेचर ऑल्सो कम्स अप विद द लॉस ऑफ अ पर्सन. एक इंसान को खोना जो है उससे बड़ा लॉस कुछ नहीं है. बट देयर आर ऑल्सो वेज इन विच वी कैन मैनेज दैट. अभी मैंने आपको एक साइकिल समझाया कि ये सारी डिफरेंट स्टेजेस रहते हैं किसी को खोने के बाद. बट what are the ways in which we can manage that? So सबसे important एक चीज रहती है ceremonies. There are funerals, there are cremations, चौथा होता है, 13वीं होती है. These are ways in which a person processes loss.
ये ऐसे ही नहीं बनाई गई हैं. There are scientific reasons for these ceremonies. They help you they help you understand that this person is now gone and we need to make peace with the fact. Mhm. Then give yourself some time. आपको टाइम देना पड़ेगा to accept the whole situation. इतनी जल्दी नहीं आता है. There have been people I know जिन्होंने loss experience किया है and it's been 1 or 2 years और अभी भी they are still struggling. So it takes time and be kind to yourself that this will take time. You will get some time to process the loss. Accept your emotions. आप बहुत तरह के इमोशंस फील करेंगे. आप गुस्सा भी आपको आएगा, आपको दुख भी होगा, आप फ्रस्ट्रेट भी होंगे, आप चिड़चिड़े भी हो सकते हैं. These are all manifestations of emotional pain. बट ये एक्सेप्टेंस आनी बहुत जरूरी है. यू नीड टू बी मोर माइंडफुल ऑफ दीज इमोशंस के ये होंगे. टॉक अबाउट योर फीलिंग्स. आप किसी अपने से बात करिए. आपके कोई और लव्ड वंस हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं. यू कैन टॉक टू योर पार्टनर. टॉकिंग रियली हेल्प्स. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू प्रोसेस द लॉस. गेट सपोर्ट. कई बार अपने लेवल पे हम नहीं कर पाते हैं चीजें. इन दैट केस ज्वाइनिंग अ ग्रुप ऑल्सो हेल्प्स. ये ग्रुप्स उस टाइप के हो सकते हैं जहाँ पे आप जैसे लोग हैं. देयर आर लाइक माइंडेड पीपल हु ऑल्सो टॉक अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस. ऑल दीज थिंग्स रियली हेल्प process the feelings of loss and grief. Right. So very well said, मीनाक्षी, right? तो अब कोविड के टाइम पे बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है. They have undergone a lot of grief process. A lot of mental health concerns have started coming up during the pandemic, post pandemic and all. In terms of depression होने लगा है लोगों को, anxiety होती है, phobias होने लगा है since they have lost of their loved ones. And this trend has been increasing day by day due to the uncertainty that has created. तो जैसे आपने कहा गुस्सा आता है, दुख होता है, बट इससे उभरना इतना आसान नहीं है और उतनी आसानी से एक्सेप्टेंस भी नहीं आती है. सो हमारे while we were seeing बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं pertaining to this कि एंगर इश्यूज है, कैसे मैनेज किया जाए. इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है, इसको कैसे मैनेज किया जाए. डिप्रेशन सिम्टम्स को कैसे हम उभर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं. एंड अगर इरिटेशन हो रही है पोस्ट रिटायरमेंट या एजिटेशन हो रहा है, उससे कैसे हेल्प मिल सकती है. और जब नींद की दिक्कत होती है ड्यू टू इमोशनल पेन, उससे कैसे हम हेल्प ले सकते हैं. सो ऐसी क्वेश्चंस आए. आई वांट यू टू शेयर सम of your insights about this, throw some light. I'm glad that people are asking these questions क्योंकि awareness is often the first steps towards recovery. कई बार हम उसको मानते नहीं है कि प्रॉब्लम है, but people are talking about loss of sleep, they are talking about anger issues, they are talking about depression, they are talking about agitation. So ये सारे issues जब तक हम बात करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ठीक नहीं होंगे. Sorry, guys, please put yourself on mute. Yeah. So people have started asking these questions as often first step towards recovery, as I already said. So अब हमें क्या करना है कि हमें ये समझना पड़ेगा that all of us experience emotional disturbances at one point or the other. ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. हम सब स्ट्रेस फील करते हैं, हम सब कभी ना कभी लो फील करते हैं, इरिटेटेड भी फील करते हैं, कभी कभी नींद की भी डिस्टर्बेंस होती है, एंड दैट इज फाइन. लेकिन what we need to understand is that there are certain criteria which need to be understood जहां पे हम इसको problematic बोलेंगे. तो अगर मुझे 2 दिन नींद नहीं आ रही है, that's fine. बट मुझे अगर 2 हफ्ते नींद नहीं आ रही है, I need to consult a doctor. If I'm sad for 2 days, that is okay.
But if I'm persistently sad and I am not able to make myself happy despite trying, I need to visit a doctor. I need to visit a mental health professional. ये सारी चीजें जो हैं, डिप्रेशन, सैडनेस, घबराहट, डर, इरिटेशन, लॉस ऑफ स्लीप, लॉस ऑफ appetite, different sensations in the body, pain in the body, ये सारी प्रॉब्लम्स जब फ्रीक्वेंटली होने लग जाएं, बहुत लंबे समय तक होने लग जाएं या बार बार हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये अब मेंटल हेल्थ इश्यूज बन चुके हैं. इमोशनल पेन जो है, इट sometimes gets converted into mental health issues as well. So हमें माइंडफुल रहना पड़ेगा कि ये कब बढ़ गए हैं, कब हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए हैं. बहुत बार हम अपने लेवल पे चीजों को हैंडल कर सकते हैं, बट ऐसा भी होगा कि हम नहीं कर पाएंगे डिस्पाइट सेवरल अटेम्प्ट्स. So what we need to do is we need to speak to a professional. We need to visit a doctor or a psychologist or a counselor जो हमारी मदद कर सके. These are very, very important to understand. राइट. सो जैसे आपने कहा, जब इंटेंसिटी उस लेवल पे बढ़ जाए जब हमें लगे कि हाँ, हम अपने आप से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कुछ सिम्टम्स को, हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा वेंट आउट की जरूरत है और इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है सैडनेस का, घबराहट का, जहाँ पे हमें लग रहा है कि नहीं, हमसे नहीं होगा. सो उस समय हमें प्रोफेशनल्स की हेल्प लेने की जरूरत है, बिकॉज प्रोफेशनल्स की जब हम हेल्प लेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे से हम अपने इमोशंस को मैनेज कर पाएंगे. So that is how it's important to seek professional help, so that we Right. can identify, as you said, what are our major concerns and where we need to work on, and how we can identify different signs of distress, sort of a thing. Right. Well, I would just like to add one more thing here, Navya. Before we move forward, I would also like to hear our participants' thoughts about speaking to a mental health professional. आप लोग क्या समझते हैं कि whether it's helpful, whether it's not helpful, or what should be done if you are going through some kind of emotional distress. Please write that in the chat box and let us know what are your thoughts. Yeah, Navya. yes. So, meanwhile, our audience are sharing their thoughts about, consulting the professional. So I have seen a lot of my clients in my experiences that, they feel जब कुछ ज्यादा ही डिस्ट्रेस फील होता है तभी हमें थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए. When I'm in an extreme pain, when it's, towards the extreme side, जब हम mild symptoms है या moderate है, then they're like, okay, I can still manage. But जब extreme हो जाए तभी हमें जाना चाहिए. That is what I have seen from my experiences. Would you like to share? Yeah, Ma'am. definitely. मैम. Yes, ma'am. हेलो. Yes, ma'am. हेलो. हाँ जी मैम. हाँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहती हूँ. जैसे अभी मैडम कह रही है कि जब ज्यादा बढ़ जाए तो कंसल्ट करना चाहिए. ऐसे नहीं होना चाहिए. जब थोड़ा सा भी ऐसे लग रहा है हमें कुछ, ये नहीं कि साइकेट्रिक की प्रॉब्लम है, इन जनरल भी लोगों के अंदर आ जाती है प्रॉब्लम्स. उसमें ऐसा है कि किसी से अपने मन की बात शेयर कर लो, या कोई सजेस्ट करता है कि काउंसलर से या साइकेट्रिक से, तो कोई जरूरी नहीं है कि सबको मेंटल प्रॉब्लम ही हो सकता है. वो जो थोड़ी सी जो प्रॉब्लम आपके आ रही है ना, वो उसी वक्त खत्म हो जाती है. अगर आप सोचोगे हमें शर्म आती है और लोग क्या कहेंगे, तो दैट मीन्स द प्रॉब्लम विल इंक्रीज ओनली. उसमें कम होने का कोई चांस नहीं है. क्योंकि मैं एज ए केयर गिवर एंड आई एम द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. मैं कोई साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मगर 24/7 आई वाज विद माय डॉटर. तो मैं अब लोगों को यही बताती हूँ, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इवन इन द पैंडेमिक पीरियड आल्सो, मैं लोगों को यही बताती थी, जब थोड़ी सी प्रॉब्लम है इमीडिएटली नियरेस्ट फ्रेंड्स को या फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए, यू विल गेट द सॉल्यूशन. तो अगर सोचते सोचते जाओगे तो द प्रॉब्लम विल इंक्रीज. Instead of start from the tension, then depression,
देन अदर प्रॉब्लम्स। तो मेरा तो कहने का मतलब है, जब थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम आती है, जब मैडम जब बाकी चीजों के लिए लगता है मुझे राइट साइड में पेन हो रही है, ये बाजू में पेन हो रही है, हम खुद क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर के पास जाते हैं, हो सकता है मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तो देन उसमें जा सकते हैं। तो व्हाट अबाउट द मेंटल हेल्थ, उसके लिए क्यों नहीं हम सोचते हैं? हमें तो सोचना चाहिए और इमीडिएटली जाना चाहिए। मेरे राय से तो यही है। बिल्कुल, बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं और आप जैसे अवेयर लोग ही हैं जो कि मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि अभी ये चीज़ नहीं समझते हैं कि छोटे-छोटे इश्यूज़ को वी कैन एक्चुअली निप देम इन द बड। तो अगर उसी टाइम हैंडल कर लिए जाएँ तो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन बिल्कुल। कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाती हैं कि जब तक हमारे पास लोग आते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। So, we are doing a lot of awareness campaigns because of that कि जल्दी से जल्दी लोग अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, जल्दी से जल्दी लोग हेल्प लें ताकि इतने बड़े इश्यूज क्रिएट ही ना हो। सो वेरी राइटली यू सेड कि छोटे लेवल पर ही हेल्प ले लेनी चाहिए। ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Yeah, I can see there are a couple of questions in the chat Yes. box. There's one very interesting question. Does emotional pain manifest itself physically? तो कोई इसका आंसर देना चाहेगा या कुछ कोई कमेंट करना चाहेगा कि इमोशनल पेन क्या फिजिकल पेन में दिखाई देती है या बॉडी सिम्टम्स में कहीं दिखाई देती है? एनीबॉडी? मैम ऐसा है, हम्म। मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी मैम। बॉडी पेन में ऐसा होता है कि सिम्टम्स ऐसे शो होता है, जैसे थोड़ी घबराहट, शिवरिंग होना है और ठंडा पसीना आना है, और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है दरवाजा बंद कर लो, किसी से बात करने का मन नहीं है। मतलब ये छोटी सी ये जो प्रॉब्लम्स आ रही है, फिजिकली भी सिम्टम्स पता लग जाता है। by seeing the face itself we can find out इसके अंदर कोई घबराहट नजर आ रही है, ही इज नॉट इन राइट पोजीशन, हम उसको देख के भी गेस कर सकते हैं इसके बारे में। तो हम उससे वो बताने के पहले ही हम उससे पूछ सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम, आप जो भी बात है हमारे से शेयर कीजिए, तो सोल्यूशन निकलेगा। हम पूछ सकते, किसी किसी को आ जाते हैं, या तो कई बार हाथ नर्वस होना शुरू हो जाता है, उंगलियां में कपकपी आना शुरू हो जाती है, तो कई बार माथे में देख ले ऐसे झुर्रियां पड़ने लग जाती है, जैसे ज्यादा सोच होती है तो कैसे होती है। तो दिस आर ऑल द सिम्टम्स ऐसे आती है, तो फिजिकल में भी हम देख सकते हैं इसको। तो जी जी, तो वेरी राइटली सेड। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर बोथ कनेक्टेड, दे आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। तो अगर माइंड में कुछ डिफिकल्टीज आ रही हैं, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो बॉडी में दिखेंगे। इट एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट बायोकेमिकल चेंजेस इन द बॉडी। अगर मैं परेशान हूँ, इफ आई एम फीलिंग अ सेंस ऑफ डिस्ट्रेस, इफ आई एम इन पेन, इमोशनल पेन, there might be a lack of sleep, there might be a lack of appetite, मैं विड्रॉन बिहेवियर एक्सपीरियंस करूंगी, मैं किसी से बात नहीं करूंगी, मेरी स्पीच कम हो जाएगी, हो सकता है मेरी बॉडी मूवमेंट्स भी कम हो जाए, या ये भी हो सकता है कि मुझे पेन होने लग जाए फिजिकली। बहुत से लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, पेट में दर्द होने लग जाता है, इंडाइजेशन होने लग जाती है, दे फील नॉजिएटेड। सो इट इज वेरी कॉमनली सीन कि जिन लोगों को इमोशनल डिस्ट्रेस होती है उनको कई बार फिजिकल सिम्टम्स भी आने लग जाते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी डिस्ट्रेसिंग. So that becomes a cycle where the emotional pain affects the body and the physical distress leads to, it also adds to the emotional distress. So वो cycle चलने लग जाता है. Right. So Meenakshi, we have interesting responses as you also mentioned कि वो अलग-अलग way में manifest होता है, like कुछ काम करने का मन नहीं करता, तो one few of our audience has said like lethargy feel होता है, lack of interest है, रात को disturbed sleep रहता है, बहुत ज्यादा
बैकएक्स में our emotional pain gets manifested, irritable bowel syndrome होता है जो बहुत मुश्किल होता है at times manage करने के लिए for both working and non-working professionals. Absolutely, absolutely. Right. Anybody else would like to share their experience with emotional pain? कैसे physical and emotional pains are related? Okay. So yes. So as you were mentioning, Meenakshi, like we can identify different triggers and emotional pain in ourselves. What can we do, and how can we help someone else in our loved ones who is undergoing emotional pain? Hmm. Again, the first step is identifying the signs. दूसरे इंसान में साइंस कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? By understanding their behavior, by observing what they are doing and what they're not doing. So a lot of times people who are experiencing emotional pain, they become withdrawn. वो बात नहीं करते हैं, वो कट ऑफ कर देते हैं, वो कंप्लेन करेंगे कि मुझे फिजिकल पेन हो रहा है या मुझे सर दर्द होने लग जाता है, और दे माइट स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ क्राइंग, बिना बात पे रोने लग जाएंगे या घबराहट एक्सप्रेस करेंगे, और दे माइट एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ लॉस ऑफ होप कि अब क्या करना है जी के, अब आगे कुछ नहीं रखा है, और दे माइट एक्सपीरियंस सेंस ऑफ वर्थलेसनेस दैट मैंने जिंदगी में किया ही क्या है, I haven't done much. So these are different signs which you can identify. तो साइकोलॉजिकली हम इनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में भी डाल सकते हैं. आई हैव जस्ट स्पोकन अबाउट बिहेवियरल साइंस, जो दिखता है. थॉट प्रोसेस में भी चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन वो उनकी बातों से ही आप समझ सकते हैं. जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स दिए कि आगे कुछ नहीं रखा है, अब जी के क्या करना है, और लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और नोबडी लाइक्स मी, और नोबडी लव्स मी, और आई एम अ फेलियर, आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रिग्रेट्स, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था. दीज आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ डिस्टर्ब्ड थॉट प्रोसेस, जो कि हमें समझने चाहिए टू आइडेंटिफाई साइंस ऑफ डिस्ट्रेस इन आवर लव्ड वंस. तो ये कुछ छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो कि आप अपने प्रियजनों में देख सकते हैं, जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. एंड देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टॉक. आप उनसे पूछिए व्हाट्स गोइंग ऑन, आर यू डूइंग ओके. कई बार इतना ही पूछना एक बहुत बड़ा जो है बैरियर क्रॉस कर देता है, कि हम किसी से पूछ रहे हैं क्या सब ठीक ठाक है. सिर्फ इतने पूछने से वो आपको बता सकते हैं. तो कैन आई बी ऑफ हेल्प टू यू, कैन आई क्या मैं आपकी बात सुन सकती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या चीज तकलीफ दे रही है. सो बी ओपन टू लिसनिंग. ट्राई एंड ओपन अ कम्युनिकेशन विद पीपल यू सी हु आर इन डिस्ट्रेस. वो कम्युनिकेशन चैनल खुला होना चाहिए. तो जैसे हमारी मैम ने कहा कि छोटे लेवल पे ही प्रॉब्लम्स हैंडल हो सकती है. छोटा लेवल हमारे आसपास ही है, ये हमारे अपने हैं जो कि हमारी मदद कर सकते हैं. हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारे भाई बहन हो गए, हमारे दोस्त हो गए. हम ही अपनों से पूछ सकते हैं कि आर यू डूइंग ओके, इज एवरीथिंग ऑल राइट, कैन आई हेल्प यू. बहुत छोटी चीजें हैं, बट टॉक, जस्ट टॉक. बात करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बात करने से ही आपको समाधान मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे. राइट. सो जैसे आपने कहा कि बात करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जिसकी वजह से बहुत सारे हल निकल के आते हैं. जब हम बात नहीं कर पाते या एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तब हमारे अंदर बहुत ज्यादा पेंट अप होते जाते हैं इमोशंस. सो अगर हम अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ी सी भी बातचीत करके उनके कंसर्न्स जान ले, तो हमें काफी हेल्प मिलता है, और उनको भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ, कोई तो है हमें सुनने वाला. जब हमें लग रहा है कि हाँ, हम उनको एक हेल्पिंग हैंड दे रहे हैं और कुछ चीजें हमसे भी हैंडल नहीं हो सकती, तो वी कैन रेफर देम टू टेक अ सीक हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल हेल्प्स. बहुत सारे मे बी हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन थेरेपी सेशंस लेना चाहिए कि ऑफलाइन लेना चाहिए.
So would you like to share something on that? देखिए बहुत टाइम से जो थेरेपी सेशंस होते थे वो इन पर्सन ही हुआ करते थे। ये पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चेंज हुआ है व्हेन वी स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग द पैंडेमिक कि हम किसी को फिजिकली नहीं देख सकते हैं, किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ वेरियस सेफ्टी रीजंस। सो थिंग्स बिकेम मोर ऑनलाइन और ये भी देखा गया कि ऑनलाइन थेरेपी ने भी इक्वली काम किया, उतनी ही इफेक्टिव रही जितनी इन पर्सन। हाँ, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, देयर आर समटाइम्स प्रॉब्लम इन कनेक्शन, देयर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन people don't know how to use technology, but once they start taking sessions or the treatment online, it hasn't shown much difference. But now things are much different. We are, so much aware of how technology can help therapy and mental health. So ये हमने काफी सारे बैरियर्स क्रॉस भी किए हैं। देयर आर डिफरेंट सेफर वेज इन विच वी कैन डू दीज थेरेपी सेशंस जहाँ पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर सकते हैं। देयर आर टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स एज वेल। So, this is again a very different trend that we are following, and this is something that people need to try. Online therapy is as good as in-person therapy. I can see one more question in the chat box. After my mother passed away in May last year, but after around 5 months, I started feeling sad over past memories, remembering her getting bedridden over previous 1 year, and used to remain nostalgic and always looking for old photos of her. After it started affecting my productivity, I had to take professional help. Thank you, Mr. Agarwal, for sharing this. ये कई बारी delayed grief reaction भी होता है. So sometimes जैसे मैंने आपको different stages of grief बताई, sometimes we stay in a state of denial for a very long time. नहीं, this can't happen with me. Why did this happen to me? And loss of a parent is something which has consequences. You are losing a huge part of your life. So, it takes a while for you to just get back to your senses कि हाँ ये हो गया है. And if a parent passes away because of illness or there is untimely death, it is even more difficult. So there I have had experienced such a thing, and there are certain people I came in contact with who have experienced this. So there is a delayed grief reaction, and sometimes it is not easy to get better on your own. आप चाह कर भी अपने आप को improve नहीं कर पाते हैं, and the worst part is that your functioning starts get affected. जो प्रॉब्लम है हमारे लाइफ के अलग अलग एरियाज पे असर डालने लग जाती है. योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर perception of yourself, your perception of the world, your whole outlook. So I am really happy that you took professional help, and I hope you're doing better now. And I want everyone to just appreciate this person that they are sharing their experience with us. So wonderful. Thank you for sharing this. Yes. So Meenakshi, it's really great that people are coming up and sharing their experiences and taking the initiative to seek professional help, and they're motivating others also to seek professional help. So as you said, a lot of areas or a lot of domains get affected due to emotional pain once we lose someone, or we have traumatic experience and we manifest it in different ways. So a lot of our viewers would like to know, if
it impacts our different domains. So how can they build resilience? How can they stay happy? Or how can they manage their emotions at different phase of their life? Okay. So yes, I did come across this question where somebody asked us, how can I stay happy? Mhm. And it's very interesting that we try and wait for bigger events to happen in our life, and we do not give credit to all the smaller things that are happening around us. Being happy is not very difficult. Trying to remain calm is again not very difficult. बहुत छोटी छोटी चीजें हैं which are comprised of self care. अब सेल्फ केयर होती क्या है? मैं अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखूं, मैं अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखूं, आई टेक केयर ऑफ माय कॉग्निटिव हेल्थ एज वेल. So there are different aspects of self care. So what I'm talking about is creating a protective layer around us. हम खुद को एक तरीके से लैमिनेट कर लें, so that any incoming threat or any incoming issue will not affect me to that extent. So it's like आप इम्यूनाइजेशन करवाते हैं. आप क्या कर रहे हैं? आप फ्यूचर में आने वाली बीमारी से खुद को बचा रहे हैं. So these are very simple things which you might say कि ये तो हमने सुनी हुई है. So what I will tell you is you need to get 7 to 8 hours of sleep. आपके लिए सही नींद बहुत जरूरी है. You need to have a proper sleep wake cycle. Why? Because it regulates your body. It regulates your body and your mind. आपका सिकार्डियन रिदम जो है वो उससे रेगुलेट हो जाएगा. आपकी बॉडी के जो केमिकल्स हैं वो भी उससे बैलेंस हो जाएंगे. That is one. Then secondly, eat nutritious food. हम इतने बिजी हैं आजकल कि हम ढंग से खाना तक नहीं खाते हैं. जल्दी जल्दी में जो मिला खा लिया. A lot of people who are elderly, वो थोड़ा बहुत सिंपल खाना दलिया बना लिया, खिचड़ी बना ली, वन पॉट मील उस तरह से बना लिया कि चलो हम ही ने तो खाना है. कई बार ब्रेड खा लिया. दैट इज अनहेल्दी. या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है आजकल, जो यंग प्रोफेशनल्स, they don't have any time to eat. So that is again unhealthy. अगर आप सही eating habits रखेंगे, your body will respond to that. Your body will get the strength to fight physical and emotional problems. उसके बाद keep yourself active. Again, both physically and mentally. Try to do at least 30 minutes of some form of exercise every day. चाहे वॉकिंग हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो कुछ भी सिंपल एक्सरसाइज हो, जस्ट स्ट्रेचिंग हो. डू इट जस्ट फॉर 5 days in a week. आप ये कर सकते हैं. आप कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाज करिए. ट्राई टू काम योरसेल्फ. 5 मिनट के लिए आप शांति से बैठ जाइए. 5 मिनट के लिए आप कोई गाना सुन लीजिए. Try to incorporate these simple rules in your life which are going to help you. Keep your brain active. अपने brain के लिए हम try to get into stimulating conversations, try to do puzzles, try to get into debates. इस तरह की conversations करिए. अब आप कहेंगे ये नया क्या है, ये तो हमें पता है, ये तो सब जानते ही हैं. But try to do each one of them every day, and then you will understand how hard it is. Trying to focus on your sleep, on your nutrition, on your exercise, on your leisure activities, on your physical and emotional fitness. All these things need time and dedication, but these are ways in which you can build resilience. Then along with that comes social support. आप लोगों से कितना जुड़े हुए हैं. आप अकेले तो नहीं हैं, आप आइसोलेटेड तो नहीं हैं. You have to have a social network, चाहे वो एक इंसान का हो, but you need to stay connected because we all are social animals. We need some kind of a support. We can't live in isolation. So these are very small things which we all know, but we often forget.
अगर आप ये चीजें याद रख लें, these are going to be very helpful in building resilience, and these are going to, help you in keeping your mental well-being for a long time. Right. So, Meenakshi, as you said, emphasizing on our self-care is really important. It's one of the steps to build resilience towards emotional pain. So I would like to ask, like, what would you suggest? How often should we emphasize on self-care? Should we do daily or it should be done? How often should we engage ourselves in that? Oh, every day. Every day. Out of these 5-6 things, you need to do at least 2 every day. कोई भी 2 चीजें उठा लीजिए, आप उनको करिए, you will feel the results. चाहे आप अपनी sleep के ऊपर work करिए. Try to sleep on a fixed time, try and get up on a fixed time. आप खाने पे ध्यान दे दीजिए. Let's say कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड कर रहे हैं. Eat it thrice in a day. या carbs ऐड कर रहे हैं या reduce कर रहे हैं. So these are very small things. Try and do that. डाइट में fruits ऐड कर रहे हैं. छोटी छोटी चीजें, एटलीस्ट डू 2 थिंग्स. दिन में एक पजल सॉल्व कर लीजिए, दिन में एक दोस्त से बात कर लीजिए. So just pick any 1 or 2 things and you will see the results in a few days. आप खुद खुश महसूस करेंगे. Your happiness is in your hands. हम दूसरों में खुशी नहीं ढूंढ सकते हैं. Let's not wait for bigger things to happen to you. Let's try and create situations which make you happy. Do all those things which give you pleasure, and you will see the difference. Right. Very well said, Meenakshi. As you mentioned, I would love to ask our audience, like, what kind of self-care activities do they engage in on a day-to-day basis? Please share your experience in the comment box. And at the same time, you can share your questions for our speaker so that we can take the questions also. Well, I like to play with my dog. I have a dog who is very active and very, very, very crazy. And playing with him it makes me happy, and it's a huge stress buster. So that's well. one. What about you? How do you release your stress? So I like to paint, I like to doodle, I like to paint, I like to sketch. So that's one of the way, like, I went out my emotions and my feelings, be it positive or negative. So that's how it helps me to feel good and distress myself. That's great. That's a very positive way in which you channelize your stress. Great. So we have people mentioning that, they do journaling, take walks, exercise, engage in these ways. That's great. So every individual has different ways, to engage in their self-care activities. That's good to hear. Yes. Oh, solving puzzle. That's interesting. Please share your experience in the chat box. Please share your questions. Meanwhile, there's one question, Meenakshi, like, how to deal emotional pain in terms of, relationship issues. How to address that? See, that is something very tricky. Relationships, when they end, they do create a lot of emotional pain. Sometimes, when there is incompatibility, when there are prolonged issues in relationships, they also cause emotional pain. Like if a couple is not compatible with each other, like, somebody got married, शादी के बाद पता चलता है that this person is not someone I would like to be with. लेकिन वो छोड़ नहीं सकते हैं because of societal pressure. So that also leads to emotional pain. अब उसमें आप देख सकते हैं whether these issues are modifiable or not.
रिलेशनशिप्स में हमें सोचना पड़ेगा कि क्या ये इश्यूज लॉन्ग टर्म रहेंगे या इनको रिजॉल्व किया जा सकता है. If there is a chance of resolution, definitely that should be considered. बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट हेल्प करती है, बहुत बार मैरिटल काउंसलिंग भी हेल्प करती है, एंड रिलेशनशिप इश्यूज कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली. कई बार ऐसा होता है कि नहीं हैंडल कर सकते हैं. देयर आर sorry, I will not be able to say that word, but वो differences इतने ज्यादा difficult हो जाते हैं ठीक करने कि आपको separate होना पड़ता है. Sometimes people do separate. कई बार शादियां भी टूट जाती हैं, relationships भी टूट जाती हैं. So I think that is a good option at that time when the differences are so much that they cannot be rectified. But definitely relationships mein the first step is to see if the problems are reversible or not. If they are, then wonderful. If they're not, then you have to take a call. Maybe that is for the better. Right. Yeah. Thanks for sharing your insight about it. So people are sharing that, they watch their favorite shows, being positive enough by helping others. Right. So that's how people are, engaging in self-care activities. Please. There's another question that I'm getting here separately. Sure. How to let go of past bad events memories? Now, a lot of us do go through bad experiences. बहुत बार, there are things go unexpected. जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है. And they sometimes scar us. They sometimes lead to bad taste in the mouth. That why did this happen? So that can cause emotional pain. Letting go is very difficult. We need to understand that, कहना बहुत आसान है लेकिन उसको करना उतना ही मुश्किल है. So letting go takes a lot of time. So if you're not able to let go of bad memories, speaking to somebody helps. Talking about it helps. Talking about how it made you feel. तो मेरा कुछ अगर experience रहा है which made me feel angry or which made me feel humiliated, I should identify that and I should talk about it to somebody who is close to me. बात करने से भी वो जो burden है वो कम होता जाता है, and it might help you in venting out. It might help you in letting go of that situation. अगर वहां पे भी help नहीं होती है, if talking to a close one does not help, then again we have to take professional help. Professional help मैं बार बार इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार अपने लेवल पे हम प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं कर पाते हैं. That is when an experienced person needs to step in. That can also be considered. Right. Thank you for sharing. I have got another question, Meenakshi. Like, they are asking, is being emotionally good for oneself? Okay. It's a very vague question, but I think we all are emotional. ऐसा नहीं है कि कोई emotional नहीं होता है. We all go through a lot of emotions. हर तरह के emotions feel होते हैं. If we are devoid of emotions, then we are not humans. So there are 6 different kinds of basic emotions in a person: happy, sad, angry, disgusted, frustrated. वो सारे emotions हम में होते हैं. कुछ लोग ज़्यादा sensitive होते हैं. So the question could have been, is being sensitive a bad thing? So it's not. कुछ लोग ज़्यादा sensitive होते हैं, कुछ लोग चीज़ों को ज़्यादा closely feel करते हैं, कुछ लोग इतना feel नहीं करते हैं. So this is one of the traits of personality. Some people experience emotions more intensely than others, which is okay. A lot of times we think that, oh, what is wrong with me? Nothing is wrong. You are just more sensitive. You just understand and process emotions differently than others. Just fine.
So, it's not a bad thing. It's perfectly fine, and you are perfectly fine. Yeah. Right. Very well said, Manakshi. So, as you did mention that, self-care is important, emphasizing on self-care so that we build resilience towards emotional pain. We should seek professional help when we face that, we are unable to manage those emotions on our own. So, I would like to let our audience know that, Samvedna has just launched a self-assessment tool called MAP. So MAP will help one to understand their mental well-being, to create their own self-care plan. And these assessments are quite simple and they are based on a scientific literature and WHO guidelines. I would like to encourage all of the audience to take some time out and explore the application and also track their wellness activities. I'll just show briefly, how does our app looks like, Samvedna app. Is my screen visible? Yes. So this is how, once we sign in, this is the dashboard it looks like. So we get, whatever assessment we have taken, it does show which level do we stand. Then we can see our results, we can download our report, we can share it on our emails. And then there's a self-care. So each day there's an activity that we can do for our own self. So self-care activity. Then we have quick questions asked, what time do we sleep? What time do we get up? How are we feeling today? Pertaining to that. So once we log our sleep habits, our quality of sleep, and how we are feeling today, so we can see and we can map through it through sleep tracker and a mood tracker. So it does show us for 7 days, 1 month, 6 months, and even we can customize keeping, from which month to what date, what particular month we want to see how we are doing in terms of sleep, in terms of mood. And then we have daily activity tracker. So each day we get activity and we can log and we can see, in each domain, as Meenakshi also said, we need to work on nutrition, cognition, self-care, exercise, and socialization. So, we can map how we are doing on each of these domains. So it does show how much we have completed. So it's really important to, log our self-care things, how we are doing on each day. That helps us to improve our self-care and, improve our quality of life. So I would be sharing the link on the chat box. I'll ask the audience go through it and explore the application. I've shared it on the chat. So I request each of our audience to go through this tool, map tool, and take a self-assessment and see how they're doing in terms of mental health. There are a lot of audience who are caregivers, so they can see, are they experience any caregiver stress? Where do they stand? How is their mental well-being? We do have assessment for dementia. Yes. So, just take a look, explore. It's a very interesting and easy app. So, Meenakshi, I would like you to, share your, self-care tips, any tips for our audience to manage, emotional pain. Mhm. So I will come back to the very basic ones that I shared earlier. That couple things. Just try to do a couple of things in a day. Try to eat one nutritious meal in a day. Try to speak to one friend in a day. Try to walk a little bit more in a day. Try to count your steps. कितना चल रहे हैं. Try to do some stretches in a day. Try to do some relaxation activity in a day. These are very small things, but these are very, very essential. These are going to be very, very helpful in improving your general well-being. They will be helpful in making you resilient.
and preventing any future episodes of emotional distress, depression, anxiety, and all those difficulties. So, just try them. And our app is also something that you need to try. This app includes everything. It also gives you customized, solutions, customized recommendations. कि आज आप क्या कर सकते हैं. Try and use that and see if that helps you. Mhm. And let us know your your experience. You can email to us and you can share your experiences. Sure. Thank you for sharing, Meenakshi. It was lovely having you. I guess, our audience would have benefited and, have got a lot of insight about emotional pain. How do, emotional pain manifest in different forms? How we can, build resilience through self-care activities, and, when to seek professional help. So that's really great. Thank you for sharing. Thank you everybody for sharing your inputs, and we will be hoping to see you again in our future events. Thank you so much. Thank you everyone for joining, taking some time out to join our webinar. Thank you.